Fine. Yeah. So hi everyone. So like as we discussed during the last class about basics of R. Fine. Yeah. So we discussed regarding basics of R, in which we covered very few topics like what is the application of R, why do we study R, what is the advantage of R over Python, okay, and then we saw few basic concepts in R and very few basic functions in R. Like we discussed the function of seek, paste. Then we also looked at the concept of concatenation of vectors. ठीक है, concatenation of vectors. We saw the function of rep, repeat, okay, and then we got to know about the concept of working directory. Working directory. ठीक है. So these were the very few topics which we covered during the first class. Along with that, we also covered about the data types, data types, and sorry, yeah. So fine. So we covered about the data types and operators. ठीक है. So हमने data types और operators के बारे में भी हमने discuss किया था, right? So these are the very few topics which we covered during the first class. Okay. Yeah. So these are a few topics that we covered in the last class, in the first class. So and in today's class, so let me tell you about the today's class and the agenda that we have. That is, we will be discussing today. That is how to, how to form matrices, how to form data frames, okay, how to read files, how to read files, okay. So what we do basically, what we'll do in R basically is that like we will try to first do the complete data analysis topics, and then after we will go to the reverse direction about the loops and conditionals, okay. So I will first try to introduce you to the concepts of data analysis in R completely, okay. So how to read files, and then we will today we will be seeing a package known as dplyr package and ggplot definitely, ठीक है. So आज हम like इन कुछ topics पे we will be talking about, ठीक है. And after studying all these topics, we'll give you very fair understanding about how R is such a nice and easy to learn language. ठीक है. Python maybe we can do all these things. Python maybe definitely we can do all these things, but the only point is that for the people who do not have much understanding of the programming, Python is little tough for them, but R is very easy to learn language for those people also. Okay. So without so this is the agenda for the today's topic class. So let me now change the screen. And I So, hope, Alok, yeah, Dushyant. Alok, what I was asking in last class, you explained something about the interpreter and compiler. So, can you explain the compiler thing again in a very basic and layman term? Interpreter मतलब जैसे अपने को तुरंत बता देता है इसका क्या सही है क्या गलत है. तो कंपाइलर का ही एक लेमन प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ एक जरा दोबारा बता सकते हो क्या मतलब था उसका? एक मिनट जो थोड़ा सोचो अंदर एग्जांपल, ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ लाइक, ठीक है. मेरे माइंड में जब तक ना कोई अच्छा एग्जांपल आ जाएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है. कोई अच्छा Yes, एग्जांपल yes, नहीं आ रहा not है. an issue, not an issue. That's okay, that's okay. कोई अच्छा एग्जांपल आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है. Sure, sure. बाय द वे लाइक इज द स्क्रीन फॉर आर विजिबल नाउ? ये क्या हो रहा है यार? हम्म. यार फाइन. And I'm hoping that you must all of you have installed R over laptops, okay. Fine, yeah. So we were here, okay. फाइन. सो एक बार हम लाइक थोड़ा सा बेसिक्स रिपीट कर लेते हैं लास्ट क्लास का जो हमने किया था, ठीक है. एंड वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन दोज टू टॉपिक्स ओनली, दैट इज पेस्ट फंक्शन एंड द सी फंक्शन, ठीक है.
उसके मैं एग्जांपल रिपीट कर लेता हूँ, दैट विल बी ग्रेट. फाइन. So like we know that rep function is basically it does what? It repeats and give you a number. It repeats a particular required value for a number of times that you want. Fine. तो जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने एक I vector create किया this. So I 1000 times. If I print I, sorry, yeah. So if I will print I, you will get 1000 I. ठीक है. Similarly, if I will print L, I will be able to get total 1000. If I mention love, then it will be love, and U, then it will be U. Fine. And then what we saw basically is that if I want to concatenate all this one to one. Okay, one to one means that इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका second, second, second. Okay, so element to element addition, that is known as. So and paste. Now you can see that. Okay, sorry, I mentioned only, yeah. Yeah, fine. So now you can see that when we use the command paste, it simply performs the element to element concatenation. Element to element concatenation. Fine. Now there is another function which was CILU. Okay. So now you can see that total it has 3000 elements. It means that simply what it has done basically is that इसने पहले I वाले को सारे एक साथ लाया, फिर L वाले को लाया, फिर सॉरी और फिर ये U वाले को सारे एक साथ ले आया है. ठीक है. So it is a very simple concept. If you want to perform the same operation in Python list, you will have to add the list. ठीक है. जब आप लिस्ट को ऐड करते हो तो वहां पे क्या होता है बेसिकली कि वो पहले आपका पहला लिस्ट एंड करेगा, फिर सेकंड लिस्ट ऐड करेगा, फिर थर्ड लिस्ट ऐड करेगा. दैट इज इट इज नोन एज कंकैटिनेशन. बट इफ यू हैव टू परफॉर्म एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन और एनी पर्टिकुलर ऑपरेशन, देन वी परफॉर्म द एरेज. ओके, वी नीड टू परफॉर्म द एरेज इन पाइथन और आर. ठीक है. So these are very basic concepts in Python. And now we'll proceed to the class 2 topics. Class 2, fine. So I have told you that we'll be starting with the matrices topic. Okay. So the first topic for today is basically your matrices. So we will see how to create matrices. We have covered this topic in the last class also. But आज हम इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे. ठीक है. मैट्रिक्स हम क्रिएट करेंगे, मैट्रिक्स कुछ ऑपरेशन करेंगे, देन डेटा फ्रेम फिर उसको लोड करेंगे, एंड देन विल परफॉर्म द डीप्लायर फंक्शंस. फाइन, ग्रेट. नाउ बिफोर दैट आई विल टीच यू वन मोर थिंग टुडे, एंड यू शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस थिंग इनटू योर प्रैक्टिस. ठीक है. तो सबसे पहले जब भी आप आर ओपन करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड बेसिकली डू इज दैट, विच आई नेवर डू बट यू शुड डू. ठीक है. आप सेशन पे जाओ एंड देयर इज ऑप्शन सेट वर्किंग डायरेक्टरी, and then you will get the option to source file location, choose directory. So always do choose directory, go there, and in whatever particular file folder you want to work, you should go there. ठीक है. जैसे हम यहाँ पे ये पाइथन की हम लाइक आर के में प्रॉपर कोर्स कर रहे हैं. सो व्हाट विल डू बेसिकली इज दैट आई विल फर्स्ट गो टू, एंड यू शुड ऑल्सो डू दिस थिंग. ओके, आप पैरेलली कर सकते हो. आई विल गो टू दिस PC, आई विल गो टू A, and I will create a folder here. Named as R4 bind4. ठीक है. अब देखो R4 bind मैंने फोल्डर क्रिएट किया. I will go to back to my R sessions, set working directory, choose directory, and A, and here I had created by the name of R. Fine, and open. Now what you should basically do is that अब आपके पास क्या है, जस्ट सोच के देखो, आपने एक स्क्रिप्ट पूरी तैयार की आर की, अब आपने उसे रैंडमली सेव कर लिया. अब प्रॉब्लम ये आएगा जब फ्यूचर में आपको ढूंढना पड़ेगा ना, तो आपकी नानी मर जाएगी. ठीक है. एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. ठीक है. सो फॉर द इजी हैंडलिंग ऑफ ऑल दिस फाइल्स, स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग मैनेजिंग, व्हाट वी शुड बेसिकली डू इज दैट वी शुड ऑलवेज क्रिएट अ सेपरेट फोल्डर, एंड इनसाइड दैट सेपरेट फोल्डर आपको मल्टीपल मैनेज करनी चाहिए फाइल्स को. आप फाइल्स मैनेज करो, प्रॉपर नेमिंग ऑफ द फाइल शुड बी डन एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक क्लास 1 for बाइंफो नेम इज देयर, ठीक है, great. And if I will go to this and sorry, new file, and then I get an option of R script. So I'll go to R script. I will first save it, and currently I am in my working directory in which I have changed the path R for bind4. ठीक है, so फाइल का नाम हम देंगे class2 R. Got it? So this is the better way of handling your files and managing your works into a proper directory. ठीक है, डायरेक्टरी का सिंपल मीनिंग फोल्डर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है, ग्रेट. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द मैट्रिसेस टॉपिक. आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, और नहीं तो बाद में पूछ लेना मुझे. ठीक है, अब अगर मैट्रिसेस की अगर हम बात करते हैं, सो हर्षिता, वुड यू लाइक टू हेल्प मी आउट, लाइक व्हाट इज मैट्रिक्स बेसिकली? Sir, I know a little bit about that. It हाँ, बस वो has लिटिल बिट rows, बताना है, व्हाट इज मैट्रिक्स, columns. सिंपल. It has rows and columns. ग्रेट. सो मैट्रिक्स समथिंग विच हैज रोज एंड कॉलम्स. ओके, ग्रेट. अब देखो, अगर हम बात करें रोज एंड कॉलम, इट मीन्स समवेयर आई एम टॉकिंग अबाउट 2D. एम आई राइट? ठीक है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट्स हियर. देयर इज 1D, देयर इज 2D, देयर इज 3D, देयर इज 4D. नाउ कैन एनीबडी प्लीज गिव मी एग्जांपल ऑफ 1D, 2D, 3D एंड 4D डेटा? So I need an example of 1D data, 2D data, 3D data and 4D data. ठीक है. So Divyanshi, any example of 1D data can you give? Hello Divyanshi, are you there? Hello. Okay. Oh, Yes, fine. I'm here. Yeah. So Divyanshi, can you please give any example of 1D data? Actually, मेरे को भी माइंड में नहीं आ रहा. चलो, बहुत बढ़िया. 2D data? चलो, great. Fine, not an issue. Gaurav, can you give example of 1D data? वन डी वन डायमेंशनल मीन्स तो हम लोग रोज प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग अपना कॉलम जीरो करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स हमारी एन इंटू एम के फॉर्मेट में होती है. ना, गलत हो जाएगा. हम मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे ना, हम अभी अभी मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल So- 1D डेटा की बात कर रहे हैं. गौरव, वुड यू लाइक टू ट्राई? यार मे बी विद जस्ट वन एस्पेक्ट, मतलब बस एक ही वेरिएबल है जिसमें 1D डेटा है. इन जनरल अगर अपन बात करें तो यस, देखो भाई, 1D होता है आपका वेक्टर जो हम क्रिएट कर रहे थे इन दिनों से, आई. ठीक है, ये आई एक आपका 1D वेक्टर है. ठीक है, 1D डेटा बेसिकली, वन डायमेंशनल डेटा. 2D डेटा आर मैट्रिसेस. ठीक है, वेयर वी हैव रोज एंड कॉलम्स. 3D डेटा यू हैव योर इमेज डेटा, इमेज डेटा. ठीक है, और मैट्रिसेस, और आई कैन कॉल इट एज डेटा फ्रेम्स, एक्सेल फाइल्स, ऑल दिस थिंग्स. 3D डेटा इज योर इमेज डेटा. आप कोई भी इमेज उठाओ वो आपका 3D डेटा होता है. 4D डेटा इज योर वीडियो डेटा. ठीक है भाई. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशनैलिटी ऑफ द डेटा, 1D, 2D, 3D and 4D. In the same time, when you will go into the direction of machine learning, the meaning of the dimension changes there. ठीक है, तो ऐसे कई बार समझते हैं कि डायमेंशन की मीनिंग क्या होती है. डायमेंशन इज अ वर्ड विच कैन बी हैव मल्टीपल मीनिंग्स इन मल्टीपल डिफरेंट डोमेन्स. ठीक है, सो या नाउ matrices. So our task is to talk about here 2D matrices. ठीक है, so like as Harshita was saying that matrices are something which has rows and columns. ठीक है, rows and columns. तो एक काम करते हैं फटाफट, एक एक सीक्वेंस ऑफ नंबर क्रिएट करते हैं 1 से 9 तक. ये देखो, हमने एक सीक्वेंस ऑफ नंबर क्रिएट किया है. ठीक है, and there is a command called as dot matrix, I guess, if I'm not wrong. Yeah, seek 1:9 by row equal just a minute. Fine, by row equals true and n row equals 3, I will. No, yeah, so
Okay, fine. But before that, what you can do basically is that, yeah. So now I am telling you one more function in R, and the task of this function is very important. Okay. What is the task? Like the function is question mark as dot matrix. अब देखो यहाँ पे कुछ समझने क्या है. Whatever functions you have in R, not it should be as dot matrix, it should be matrix, I guess. Great, yeah. Fine. So you should always use a question mark and whatever function you have. ठीक है. So अभी हम उस function को try करते हैं जो function हम deal कर चुके हैं. For example, we have talked about the seek function. ठीक है. So it will give you the help for this seek function. ठीक है. Now sequence generation. So it basically generates regular sequences. Seek is a standard generator with default this primitive. So it is telling you about the functionality being done with this associated with this particular function in R. ठीक है. So yeah, and यहाँ देखो आप seek bracket from to and by. So I explained to you in the last class also that it basically has three places. The first place is from, the beginning place. आप कहाँ से start करना चाहते हो? So 1 से करते हैं. The last place till which you want to get the sequence of the numbers, 9, and it is by what gap you want to get the numbers. Fine. If I will give 2, it will return me 1 3 5 7 9, or the sequence of the odd numbers. Fine. So this is a very important function which is known as the question mark. And suppose that I want to get the function of matrix. Now it will return the function of the matrix. So matrix creates a matrix from the given set of values. So it will be used to create a matrix from the given data. As dot matrix is a different function which we will use to convert the data type. Okay. Now here you can see matrix bracket. So this is known as the okay fine. So these are known as basically the arguments. ठीक है. आप किसी भी फंक्शन के अंदर जो चीज़ सप्लाई करते हो विच इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, ओके, दीज आर और विच आर गोइंग टू टेल द मॉडल what are the different set of parameter or the hyper parameter. These are known as the arguments. Okay, so whenever you design a function, we pass something to the function. Okay, and whatever we pass to the function, these are known as the arguments. Fine. So data is argument. So data is nothing but simply आप देना क्या चाहते हो, जो आप दोगे उससे आपका मैट्रिक्स बनेगा. ग्रेट. द n row equals 1. n row is basically how many number of rows you want to get. Okay, n call how many number of columns you want to get. By row. By row means either you want to create the matrix with rows or with columns. ठीक है. For example, if I have passed it here, matrix seek 1 is to 9. Seek 1 is to 9 is doing what basically? It is returning me a sequence of first 9 natural numbers. When I pass by row equals true, it means that I want to create my matrix in a row wise fashion. And n row equals 3. It means I want the total number of rows equals to 3. So what I'll do basically is that ये 1 से लेकर 9 तक नंबर लिया इसने. So इसको 3 रो में डिवाइड करेगा. तो देखो ये रो 1 हो गया, ये रो 2 होगा, ये आपका रो 3 होगा. लेट मी चेक am I right or not. Yeah, I am right. Now अब एक काम करते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं एक बार. So now the sequence will be reversed. See, now the rows have become columns and the column have become the rows basically. Okay, so this is a very important function matrix. ठीक है, जिससे आप सिंपली मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो इसे हम नाम देंगे मैट. एंड आई वांट टू क्रिएट अ वेरी गुड मैट्रिक्स. ठीक है, सो हम मैट्रिक्स जो क्रिएट करते हैं 1:100 बाय रो इक्वल्स ट्रू कर देते हैं एंड एन रो इक्वल्स हम 10 कर देते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे हम सीक्वेंस पास ना करके वी विल पास सम रैंडम डेटा. ठीक है, सो
just a minute. Okay, so random number generation in R unif होता है, yes, fine, got it. Yeah, so R unif. So now, okay, fine. So now I want to try one more function which is known as R norm. Okay, R norm. Let me show you what it does. Okay. Now see. So it is showing that normal stats, normal distribution. So it is telling me that R norm is a function associated with normal distribution. Then now it is my R norm function here. N mean standard deviation. N means basically how many numbers you want to generate. How many numbers you want to generate. Fine. So if I want to generate total 100 random numbers from a normal distribution, so I should pass here 100. Mean. Mean means what is the mean of the number of the mean of the distribution of the numbers that you are generating you want to get. Fine. And standard deviation, what should be the standard deviation of these numbers. Okay. So this is why this question mark is such an important function. So I will generate 100 with a mean of 0 and standard deviation of 1. Fine. And I will give it as num. Fine. Yeah, great. I would like to show you something. Density. Great. Now see. So the number, the 100 random uniform numbers, sorry, 100 normal distributed numbers that we have generated with a mean of 0 and a standard deviation of 1, उसका डेंसिटी प्लॉट कुछ ऐसा दिख रहा है हमें. फाइन. सो इसको भी हम छोड़ते हैं, ये हमारे काम का नहीं है. फाइन. या सो आवर टास्क वाज दिस. सो आई नीडेड टू जनरेट टोटल नॉर्म. या ग्रेट, वही मैं कहूँ गलत क्यों आ रहा था. या फाइन. सो दिस इज द डेंसिटी प्लॉट for my 100 normal distribution numbers that I have generated. ठीक है. Now you like if you are working in the field of bioinformatics, data science, statistics, or whatever field you are working, normal distribution is something which you can't skip. ठीक है. Because it is one of the most important functions, okay, which you come across in the daily life. So it is having the mean 0 because I passed the argument with the mean 0. And the beauty of the normal distribution is that mean, mode, median all are equal. ठीक है. But जब random generate करोगे तो it will not be exact equal. It will be something equal. Got it? Now I will generate num. Fine. So now I would like to see my mat. Now see that I have generated a matrix. I have generated a matrix. But now what I want to do is that I don't want to get my matrix something like this. I want to rename the row of my matrix using row 1, row 2, row 3 and so on. I want to rename my columns like col 1, col 2, col 3 and so on. Yeah. So यहाँ पे we know that we have total 10 rows. ठीक है. So we need to create total 10 rows, 10 rows with a sequence of number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what I can do basically is that paste and I can type row and I can type 1:10. Okay, so yeah, now you can see I got total row 1, row 2, row 3 and so on till row 10. Fine. Similarly, I will paste here col. Fine. And I got something like this. And now my task is that इसको हम रो नेम कर देते हैं. ठीक है. मैं थोड़ा सा लेंथी ले जा रहा हूँ आपको अभी, बट फिर आपको मैं ये चीज़ एक लाइन करके दिखा दूंगा. ठीक है. फाइन. फाइन. ग्रेट. Now I want to rename the name of my matrix. Rename the rows and columns. So row names, mat,
row underscore, sorry, and then call names. Great. Fine. Now I would like to see my matrix. See, now it gives you a little bit more informative, and it is a more informative matrix basically. Okay? So, okay, fine. By the way, like till here, if anyone have any doubt, then please ask me. Anyone have any doubt till here, please do ask me. यार, unmute and ask me. आलोक एक क्विक रिकैप दे दो इसी टॉपिक का. चलो ग्रेट, मैं पूरा क्विक रिकैप दे देता हूँ. ठीक है, मैं एक में दे देता हूँ. चलो, इसके अलावा और किसी को डाउट है? दैट आई विल डू अभी. इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? प्लीज बोल, हाँ या ना बोल दो प्लीज यार. नो, कोई डाउट नहीं है. चलो ग्रेट. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन. ठीक है, सो व्हाट like I explained you today agenda is that I will be teaching you how to analyze data in R basically. Okay? And in the journey of data analysis, we will be creating data frames, we will be creating matrices, we will be performing few functions upon matrices and all. So we have started with the journey of creating matrices first. So, and before that I taught you about first function today is that the question mark, which is one of the most important function in R, and Python also a question mark works. So it is basically used to tell you the functionality associated with a given inbuilt function. Inbuilt function I am telling you. ये याद रखना, inbuilt function. It will be worked used for the user defined function also. But अभी आपको नहीं पता है user defined function क्या होते हैं. That's why I am telling only inbuilt functions. ठीक है? So question mark, and then matrix is a function. So now you see that matrix, I just type question mark matrix. So it will return with a complete description of this particular function. And the function is that you need to pass the arguments as the data, because obvious अगर data दोगे तो matrix बनाएगा किसका. ठीक है, so you need to pass on the data, then you need to tell the function कि आपको जो मैट्रिक्स चाहिए उसमें कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, बिकॉज यू नीड टू पास ऑन. ठीक है, आप जब मैट्रिक्स क्रिएट करोगे कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना. ठीक है, प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना कि आप जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दे रहे हो उनका प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो इक्वल. कितने लोग कर देते हैं. अब मान लो मैंने 98 दिया है, अगर मैं नंबर ऑफ रोज 3 दूंगा तो बनेगा नहीं मैट्रिक्स. मतलब लेट मी ट्राई, मैंने सोचा बोल दिया, मैंने सोचा नहीं. लेट मी ट्राई matrix C, it should not return basically, but let us try. And row equals 3, by row equals true. Fine, it met. Yeah, it is returning me warning sound. Great. Okay. So whenever you will pass some number of rows and number of columns, keep in mind that the product of n col and n row should return the total number of elements that you are passing on. Then by row tells you want to use the sequence of the number that you have passed in the row wise fashion or in the column wise fashion. So अगर आप by row equal to true दोगे तो row wise fashion आएगा, false दोगे तो column wise fashion आएगा. एक चीज़ ध्यान रखना भाई, R के अंदर true false सब कैपिटल लिखना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल मत लिख देना, गलत हो जाएगा. पाइथन में सब स्मॉल चलता है. ठीक है, dim names का आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द फंक्शंस विद dim names right now. ठीक है, आएगा तो आई विल. एक सेकेंड, लेट मी चेक. अच्छा ओके ओके फाइन, ये भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में. ठीक है, फाइन. तो या, एंड देन आई टोल्ड यू लाइक we know statistics and statistics has a set of distributions. ठीक है, like uniform distribution होगा, binomial होगा, normal होगा, then Chebyshev distribution होगा, a lot of distributions are there. ठीक है, so and whenever we are working in the area of data science, we need to create random numbers a lot of times. So for that R already has inbuilt functions related with all these tasks. ठीक है, जैसे R unif, तो R unif random uniform number generate करता है. फॉर एग्जाम्पल 100, मिनिमम आई नीड टू गिव, मिनिमम वैल्यू कितना देना है 0 एंड मैक्सिमम 1. ये देखो, सो ये आपका 100
यूनिफॉर्म नंबर जनरेट कर रहा है बेसिकली 0 से 1 के बीच में, ठीक है. बट for all these things you need to have a good solid understanding of statistics before using these, because you should know why am I using r unif, r norm or r binom. You should have a solid understanding of all these things. Directly use करना बेकार होता है, ठीक है. Great. So right now for the sake of explaining the things, I have created random normal distributed numbers 100 with a mean of 0 and standard deviation of 1. And this is known as standard normal distribution. Whenever the mean is 0, standard deviation is 1, this is known as standard normal distribution. Then I passed on this num data, num as the data, by row equals to n row equal 10. It means I want to get total 10 rows. So obviously automatically I will have total 10 columns. Then I want to rename my rows. Okay, fine. एक आपको दिखा देता हूँ. Fine. Yeah. So currently you can see that I do not have the row names. It is lying from 1 to 10 in this manner, and column name v1, v2, v3, v4 and so on. So I want to change them. So for that task I created this row name and column names, and then I will use these functions. So row names is used to rename the rows, column names is used to rename the columns. ठीक है भाई. So ये आपकी दो important functions है, and after this now you can see your function. Got it? Now Chai, everything clear? Yeah, Alok. चलो great, ठीक है. Now I will apply. Now I will teach you few things which are very important. अब थोड़ा सोच के देखो यार, ठीक है. थोड़ा सोच के देखो आप. वो जब डेटा साइंस करोगे आप, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ हमें करनी होती है, ठीक है. अब मैं चाहता हूँ कि मुझे हर एक कॉलम का मिनिमम वैल्यू मिल जाए. हर एक कॉलम का मिनिमम वैल्यू मिल जाए. And I want to get the sum of all the columns, the column 1, column 2 and so on. I want to get the sum of all the rows. So row wise and column wise operations basically. Row wise and column wise operations. So now I am teaching you the very basic function called apply. ठीक है. ज़्यादा apply function मुझे आते नहीं है basically, like normally मैं अपने सारे काम apply से कर लेता हूँ. But a lot of apply family functions are there. L apply, S apply, T and other apply. So you should explore all these things. I will be teaching only the apply function. So apply, and now again if I want to use this apply function, first task is that I should print a question mark and apply and see. It didn't return us anything, but it has returned something like this. Help on topic apply was found in the following packages. Yeah, यहाँ पे हम गए. Now यहाँ पे click करके आ गया, ठीक है. Now you can see here x margin function and something. So now we need to know what is x. So x is an array including matrix. So because apply family functions are to be used over the data frames or the matrices, so I need to have a data frame as the input first of all. Margin basically tells you you need to apply the function upon the rows or the columns. Yeah. Then fun is basically the function that you need to apply. Whatever function you want to apply, that you will give as the function. 1 apply करते हमारा row wise operation होता है, 2 हमारा column wise होता है, ठीक है. So now I will apply this function. Apply mat 1. I want to sum all the rows, and you will see the sum now. So see, I've got the summation of all the rows. रो 1 का सम इतना आ रहा है, 2 का इतना, 3 का इतना एंड सो ऑन, ठीक है. देन अब हम करते हैं यही फंक्शन कॉलम वाइज. सो कॉलम वाइज के लिए आपको 2 देना पड़ेगा, ठीक है. नाउ आई विल अप्लाई दिस फंक्शन रो वाइज फॉर प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट ने मीन फाइंड आउट करते हैं, मीन. सो एक सेकेंड, ओके फाइन, मीन. या so row 1 का मीन इतना आ रहा है, row 2 का मीन इतना है, and so on. Got it? Now I want to apply the mean upon column wise. Got it? So yeah, so it is returning me something like this. So I hope apply function is very much clear. Got it? Any doubt in apply function? Because third position पे आपको ना function देना है. जो भी function आप देना चाहते हो, that function you will pass on. And अभी देखेंगे हम इससे हम क्या क्या करेंगे इस डेटा फ्रेम में हम बेसिकली, ठीक है. So what I'm going to do now is that
I found the sum of all the rows. Now I want to analyze this sum. ठीक है? And I want to find out which particular row has the maximum sum, which particular row has the minimum sum, something like that. ठीक है? So इसको हम name क्या करेंगे? Row underscore sum. This is a very good way of renaming, ठीक है, of the variables. So ऐसे ही आप क्या करो प्लीज, ठीक है, row underscore sum या सी नो या. Now I will try to show you in this by using the function view. Okay, so it is written in a very bad manner. Great. ठीक है, I will explain you the meaning of this जो मैंने किया है अभी, ठीक है, मतलब चीज़ों को समझो, ठीक है. Now you see, row 1 इतना है, row 2 इतना है, and so on, ठीक है. So I have got the summation of all these things. Now my task is that I want to find the maximum and the minimum of this, ठीक है. So what I will do is that I will be using function max row underscore sum. Now see, maximum is itna and minimum, fine. So the maximum of this particular data frame is 1.38 and minimum is this much. Got it? Now अब मैं नहीं चाहता कि ऐसे करके मैं एक एक करके चीज़ें निकालता रहूँ, तो उसके लिए I want to get the complete summary of this. Sorry. Fine. So now you have got every like 5 number summary in a single function, the summary function. So minimum is minus 4.82. The first quartile value means the 25th percentile value, this much. Median is this much, mean is this much, third quartile this much, maximum value is this much. This is known as the 5 number summary. Got it? Now similarly I want to get this thing for the column. So I will apply the function summary. Great. Now you can see the minimum this and maximum is this much. Okay? So these are the operations how you can perform using row wise and column wise. So now suppose that आपके पास क्या हुआ कि किसी बंदे ने डेटा दिया एंड आपसे बोलता है कि आप मुझे इसके हर कॉलम बताओ मिनिमम वैल्यू कितना है, हर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है. और या सो मिनिमम मैक्सिमम यू कैन डू लाइक दिस. एंड इफ you want to make some different type of function, you want to apply some function which doesn't exist in a particular R, or you want to define some function by yourself, so you can apply that function also here. For example, एक सेकंड रुकिए, जस्ट गिव मी अ थॉट, ठीक है. मैं थोड़ी देर बाद सोचना है, फिर आई विल जब आता है मैं तब कराता हूँ, ठीक है. सो या सो इन दिस अप्लाई फंक्शन इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और स्टॉप एंड आस्क मी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. हेलो, एनीवन हैव एनी डाउट? नो बट इफ अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही समरी ऑफ मैट कर लेते तो वो हम लोगों को सेम रिजल्ट ही देते ना, इंस्टेड ऑफ हम लोग सेपरेट रो सम और कॉल सम कर रहे हैं. ट्राई कर लेते हैं. नाउ सी व्हाट यू हैव गॉट. जो समरी फंक्शन है आपका, ये ओनली आपको बस कॉलम की समरी देगा, राइट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आलोक, कैन वी ट्राई लाइक समरी फिर ब्रैकेट्स में मैट कॉमा कॉल रोज लाइक दिस. मे बी हो सकता है कि पूरे मैट्रिक्स में अगर हम कॉमा करके रोज लिखे तो सिर्फ
पूरे मैट्रिक्स में रोज का सब समरी दे, ऐसा हो सकता है? ट्राई करके देखें. Okay, fine. So you mean to say that I want to get the summary, like यहाँ पे summary function में मुझे column का summary दिया, right? But you mean to say हाँ. that I want the summary of the rows, है ना? Yes. So summary होना तो चाहिए, bracket में like definitely होना तो चाहिए. mat Let me comma. try. एक सेकंड जाओ. Let me try. ठीक है. Apply mat comma 1 comma summary. Yeah. Using this you can get. Got it? नो नो आलोक, व्हाट आई एम सेइंग, जैसे ऊपर वाला दोबारा एक बार देखते हैं, समरी देन पैरेंथेसिस मैट कॉमा फिर रो कॉलम ट्राई करके क्या आ सकता है? आप बोलते हुए लिखते जाता हूँ, ठीक है? एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ. समरी. हाँ, समरी ठीक है, मैट देन कॉमा इफ वी ट्राई रो कॉलम समथिंग. नहीं नहीं कुछ नहीं आएगा. यस नाउ. कुछ नहीं आएगा. अच्छा. कुछ नहीं आएगा. वो फंक्शन नहीं है, ठीक है? आप वही चीज यूज करते हो तो फंक्शन बनाया गया है, ठीक है? नाउ सो अप्लाई इफ यू वांट द समरी ऑफ ऑल द रोज ओनली देन यू कैन यूज द फंक्शन अप्लाई मैट 1 summary function. I told you that apply function third is the function name. Third is function name. Whatever function you want to get, you can pass it here. ओके. Got it? Yeah. Fine now. So yeah, now is it clear? So like वो सजेशन किसने दिया था ना, हर्षित. इट वाज हर्षित और समवन एल्स जिन्होंने बोला था कि लाइक हम ये पहले ही कर सकते हैं समरी ऑफ मैट करके. जस्ट गिव मी अ मिनट, लाइक आई एम गेटिंग अ कॉल. जस्ट वेट अ मिनट, ओके? Yeah, fine. I'm really sorry. Yeah. Fine. Great. So we have looked at the function of so what is the main functionality done by summary, apply, and all this. Now there is another function called lapply. Lapply भी हम apply देख लेते हैं कैसे काम करता है, ठीक है? But before that, I will introduce you one more concept now, and after that we will come back to this mat. ठीक है? Mat अभी जान ही रहा है. और this is data science. Data science तो चलता रहेगा हमारा, वो end नहीं होने वाला, ठीक है? So I'm planning introduce you new data type in R basically data structure which is known as list. अब देखो यार काम करते हैं. I need to store the marks of total कितने लोग हैं हमारे मीटिंग में? Let me check. So total 11 minus 2, 9 people are there in the meeting today, right? Let me check. Great, yeah. So total 9 people are there in the meeting today. So एक काम करते हैं हम एक लिस्ट बनाते हैं of all these 9 people and their marks in 3 subjects. I will show you how. ठीक है? So first हम क्या करते हैं, लाइक दुष्यंत से स्टार्ट करते हैं. दुष्, ठीक है? So C and बहुत ही बेकार गया गुजरा पढ़ने में भाई हमारा, ठीक है? तो उसके नंबर आए मान लो 10, 20 और 15, 100 में से. ठीक है? देन वी हैव दिव्यांशी हियर. सी मान लो ये और भी बेकार है पढ़ने में, तो 5, 25 और 10 ले आए, ठीक है? देन वी हैव मनस. सो वी हैव मान लो 35, 45 एंड 25. देन एक और ऐड कर लेते कोई हम. देन वी हैव हर्षिता. ठीक है? सी एंड ये थोड़ी सी बेटर पढ़ने में, थोड़े मार्क्स बढ़ा देते हैं. सो 50, 35 एंड 30. ठीक है? नाउ हमने 4 चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर लिया. अब सोचो, देखो आप क्या आप ये 4 चीज़ें स्टोर करके बाबा रखना चाहोगे, देखना चाहोगे? इट इज़ नेवर योर टास्क. Your task is that you should always store your marks. You should always store your marks or data in a very beautiful manner, which is
explainable to anybody, and this is not explainable to anyone. Let me tell you very frankly, this is not going to be explainable to anyone. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब विल यूज द फंक्शन लिस्ट, बिकॉज चार चीज़ें अलग अलग है, तो बेटर क्या है हम चारों को एक सिंपल डेटा के अंदर डाल दें, लिस्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे दुष्यंत, सॉरी, इक्वल टू दुष, देन वी हैव दिव्यांशी इक्वल टू, सॉरी, Divya, sorry, yeah, fine. Then we have Manas equal to Manas. Then we have Harshita equal to her. Oh, sorry. And यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? Sorry, यहाँ पे क्या लिखेंगे? Marks. No, this is a list. This is a list. Now I'll show you. भाई कौन सी बात बहुत सही है, हमें भी बताओ। क्या? भाई कौन सी बात बहुत सही है, हमें भी बताओ। अरे यार वो कुछ और, तो ये काम फोकस कर। अरे कोई नहीं यार। सॉरी, मैं स्टेटस पे कमेंट किया मैम ने, ठीक है, कुछ बोल रहा था, चलो फाइन, या सो मार्क्स, एंड नाउ वी हैव गॉट अ लिस्ट, सो लेट मी चेक द फर्स्ट द डेटा टाइप, दो लिस्ट ही है, ठीक है। अब देखो इसकी बेटर वे की, मतलब इसका हम वाई डू वी अप्रिशिएट लिस्ट, मार्क्स डॉलर, नाउ वी कैन एक्सेस एनी, मतलब ऑल दिस पीपल, अरे यार ये क्या मैंने मंस कर दिया ओनली, ओ सॉरी यार, फाइन, या सो बाय यूजिंग द डॉलर ऑपरेटर नाउ यू कैन एक्सेस ईच डिफरेंट एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक, सॉरी लिस्ट। तो मनस को अगर हम देखते हैं, यस, सो नाउ, या नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज दैट, अभी भी ये ज़्यादा बेटर वे में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है बिकॉज डेटा फ्रेम नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे एस डॉट डेटा डॉट फ्रेम, सी नाउ इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, बिकॉज हम जब मार्क्स भी पता चलिए रो नेम क्या होने चाहिए इसके, तो ये हम चेक करेंगे, अभी हम चेंज करेंगे, ठीक है। सो एस डॉट डेटा डॉट फ्रेम मार्क्स अंडरस्कोर, मार्क्स लिख देते हैं खाली, नहीं, मार्क्स अंडरस्कोर डी एफ। सो नाउ देखो यार, एज डॉट डेटा डॉट फ्रेम, एज डॉट जो होता है आपके अंदर आर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर को चेंज करने का एक तरीका है, फंक्शन है बेसिकली, एज डॉट और फिर उस एज डॉट और फिर मल्टीपल आ जाएंगे, लेट मी शो यू हियर, एज डॉट, सी लॉट ऑफ थिंग्स कम हियर, ठीक है। तो आई विल बी शोइंग यू ऑल दिस थिंग्स slowly इन टू द कमिंग क्लासेस। Now let us see how does it look like. Now see, so beautiful, it's looking nice, yeah. Now what I'll do basically is that now I will rename the rows, ठीक है। तो ये वाला जो रो है मैथ्स का है, ये साइंस का है, ये केमिस्ट्री का है, नहीं साइंस और केमिस्ट्री थी, सॉरी यार, ये मैथ्स है, ये ज्योग्राफी है, या और ये केमिस्ट्री है, ठीक है। तो रो नेम्स, sorry, row names, marks underscore df is c, maths, geography and chemistry, कुछ भी है मान लो, अभी समझने के लिए देखो आप पहले, ठीक है। ग्रेट, नाउ सी, सो हाउ आई स्टार्टेड विद वेरी बेसिक आइडिया and I structured my data into a data frame, which is very easy to understand, easy to explain, easy to represent, ठीक है। So this is the beauty of programming languages basically, not R, because ये सारी चीज़ें हर लैंग्वेज में होती हैं, ठीक है। So but इतना आसानी से नहीं पाता बाकी लैंग्वेजेस में, उसमें मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा, ठीक है। So this is how I started with this particular simple marks of these 4 people, and I stored these results into such a beautiful manner. Now what I'll do is that I need to export these marks. So what I'll do, I will write dot csv and name of the data frame that you want to export, comma, marks underscore df dot csv.
डॉट सी एस वी लिखना कभी भूल मत जाना, बहुत गलती हो जाती है. आई विल शो यू बोथ. तो क्या करें, पहले गलती करते हैं, ठीक है. सही रिजल्ट बाद में सेव करेंगे. सी आई हैव सेव द रिजल्ट. नाउ आई विल यूज द फंक्शन लिस्ट डॉट फाइल्स. Now see, it has total 2 files. Class underscore 2 underscore r dot r, the file in which I am working, and marks underscore df. But it is not in dot csv. So let us see ये दिखता कैसा है बेचारा. हमने किस नाम से सेव किया फाइल आज? r4 by info. या ये देखो. So this is not a data frame. और फिर आपको ऐसे खोलना पड़ेगा फाइल को अपने, ठीक है. सो ठीक है, तो ये CSV फाइल से सेव हो गया आपका, ठीक है. तो ये तो आप नहीं चाहते थे ना, तो दीज आर नॉट ए सिमेंटिक थिंग्स कि आप गलती ऐसी करते हो जो आप चाहते भी नहीं हो और कर देते हो. सो ऑलवेज डू राइट डॉट CSV. ग्रेट. नाउ आई विल यूज द फंक्शन लिस्ट डॉट फाइल्स एंड आई हैव गॉट दिस marks underscore df dot csv. And now I can see, yes, now the result has been exported in a Excel format. खुल जाए यार. Yes, see, तो ऐसे आप चाहते थे ना अपने लाइक रिजल्ट आना, ठीक है. आप डेटा ऐसे स्टडी करना चाहते हो. गॉट इट, ठीक है. अरे यार ये कहाँ खुल गया. ग्रेट. So anyone have any doubt till here in this particular topic, how to create a data frame? Hello. छाया, is it clear? Yeah, it's clear. मतलब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना, क्यों कर रहे हैं हम एक एक चीज. हाँ समझ आ रहा है. ग्रेट, ठीक है. बिकॉज यू शुड नो द फिलोसफी ऑफ द लैंग्वेज. यू शुड नॉट ट्राई टू लाइक learn the syntax or something. You should try to know the philosophy of the language कि ऐसा क्यों है, ठीक है. हम एक एक टर्म कर क्यों रहे हैं बेसिकली, ठीक है. जब वो चीज़ पता चल जाएगी तो फिर चीज़ अपने पास आसान हो जाती है. ग्रेट. नाउ एक बार मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ बिकॉज आई हैव नेवर यूज दिस पर्टिकुलर lapply फंक्शन. देन आई विल एक्सप्लेन इफ आई एम राइट. Oh nice, great. So now I will show you the lapply function. चलो मैं समझ गया तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ग्रेट. तो है, so lapply function is basically used or applied over list. It is applied over the list, ठीक है. तो ये तो हमारा लिस्ट ही है ना. मार्क्स जो है, मार्क्स तो भैया मेरा लिस्ट है. ये देखो, डॉलर दुष्यंत, डॉलर दिव्यांशी, डॉलर मनस, डॉलर हर्षिता. अरे बात हो, मैं चाहता हूँ कि मैं इन चारों के ना ओवरऑल परसेंटेज फाइंड आउट कर दूँ. ओवरऑल परसेंटेज फाइंड आउट कर दूँ, दुष्यंत का भी, दिव्यांशी का भी, मनस का भी, हर्षिता का भी एक ही बार में. तो कैसे कर सकते हैं आप? ओके फाइन. यहाँ मैं फंक्शन टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ आपको, ठीक है. ग्रेट. सो आई विल राइट अप्लाई, आई विल राइट मार्क्स एंड मीन फर्स्ट. सी, सो आई एम एबल टू गेट द mean. Now also I need to get the length of this first. Okay fine. So and one more thing is that the list can contain different number of elements in different this particular element. ये चीज आप ध्यान रखना भाई, ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप जो लिस्ट बनाते हो जरूरी नहीं है हर किसी के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है. सो करेंटली आई कैन सी दैट मीन इज दिस मच. परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम डिवाइड बाई n इंटू 100. नहीं, सम डिवाइड बाई टोटल होता है. ओके फाइन. सम डिवाइड बाई टोटल मार्क्स into 100. Yeah, so like total 3 subjects are here, so 300 and then I will write it here, multiply by 100. अरे यार shit, ठीक हो गया. Okay fine fine fine. Yeah, ये ठीक है. No यार, this will not work because यहाँ पे you can apply like pass on only function, ठीक है. So it will not work. बट आई वॉन्ट टू फाइंड द परसेंटेज, और परसेंटेज का कोई फॉर्मूला होता नहीं है.
So now here comes the task of user defined function. User defined function which I will introduce now after this. ठीक है, तो इतने में लाइक आई नीड टू गो फॉर जस्ट 2 minutes. इतने में आपको एक टास्क दे रहा हूँ, उसे आप करो एंड देन विल बिगिन फ्रॉम देयर. जस्ट फॉर 2 minutes आई विल बी out from the meeting. Okay, so the task is that create a vector of 1,000 random normal numbers with mean 2 and SD means standard deviation. SD equal 5. The second task इसी का part है. Convert this vector into a matrix with 100 rows and 10 columns. The third is that rename the rows in fashion row 1 so 100, row 1, row 2 and so on. ठीक है, सिमिलरली कॉलम को रिप्रेजेंट रीनेम करना है कॉल 1, कॉल 2 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड फोर्थ फाइंड सम ऑफ ऑल रोज, नहीं, find the summary of all rows, find the summary of all columns, find the summary of all columns. ठीक है, so these are the few questions that I have written here. I don't think like it will take more than 5 minutes of time, so just try to implement these things into your PC right now. ठीक है, और फिर मैं 5 मिनट में आगे स्टार्ट करता हूँ. जस्ट 5 minutes of time I need to take. ठीक है यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इन 5 minutes of time आई विल बी बैक. प्लीज ट्राई करना, भाग मत जाना. ठीक है यार, आई विल बी बैक.
Yeah, hello. Hello, am I audible? Hello. Yes. Yeah, fine. So, did you try? Yes. हो गया? Almost. Oh, that's nice. Great. कोई है जिनका नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ जिनका? आलोक एक्चुअली मैंने इंस्टॉल तो किया था बट वो शायद कंपैटिबल नहीं है मैक के साथ, तो आई एक ट्राई टू सेकंड. डू इट लेटर। एक सेकंड. कंपैटिबल नहीं है मैट्रिक्स के साथ? मैक मैक के साथ। मैक के साथ? या नहीं नहीं, मैक में चलता है यार. मैंने कुछ और वर्जन डाउनलोड किया है। हाँ यार, अब इसका तो हम नहीं कर सकते कुछ भी अभी. आई नो आई डू इट लेटर। श्योर, नॉट अ इशू. फाइन. अच्छा, बाय द एंड वे. आलोक मेरा भी हो गया, चलो रोज में हो गया, कॉलम्स में बाकी है। चलो, करो करो, कंप्लीट करो यार. अच्छा, बाय द वे. हेलो भैरवी, एम आई ऑडिबल? हेलो भैरवी, आर यू देयर? Maybe she is not there. Okay, fine. Hello, Bhairavi, am I audible to you? Hello. ओके फाइन, ठीक है, तो मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ आगे, ठीक है यार. ग्रेट. आई होप दैट लाइक दिस यू विल बी एबल टू डू, बिकॉज ये सेम टॉपिक मैंने दिए जो हमने कराए थे, ठीक है. राइट. या. सो द टास्क वाज आर दैट we need to find out the percentage of all the particular students, right? Yeah. So now in such cases where we don't have the functions associated with the task that we want to do, in those cases we need to design functions by ourselves. Got it? So this is the main task or main reason behind designing the functions. So in R there is a very simple way of designing the function. So we'll write function. You will pass here the arguments. यहाँ पे जो हम ये argument pass कर रहे हैं ये यहाँ पे हम देते हैं, and then after that you will pass this curly bracket and you will delete one curly bracket and you will go to the next line. ठीक है. आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका परसेंटेज. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द परसेंटेज? यू फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ एक्स, राइट, एंड देन you give the total, sorry, total, एक सेकेंड, बट टोटल निकालेंगे कहाँ से यार? सपोज दैट अभी हम इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए डिजाइन करते हैं फंक्शन वाले, ठीक है. सो जस्ट इमेजिन दैट वी नो दैट वी हैव टोटल 3 सब्जेक्ट्स ओनली and each of 100 marks. So 300 will be there. Got it? And then what we'll do, we'll multiply it by 100. So this will give me percentage per. And then what I'll do, I will return what? Per. And then I will close the curly bracket and I will name it as percent. See? And after that I will run it. Now see, what I've done is that I've created a function. Now if I will type percent and I will pass a vector here, मान लो 10, 20 और 30. See, 20%. ठीक है. If I will pass 100, 25 and 3 for 2.667%. Got it? So in this way we can design whatever task we want to perform. Okay, so here we wanted to perform the and find out the percentage of the given data, and we knew that we had only 3 subjects, so the sum of the 3 subjects will be 300. So I passed it here. Okay, now I want to use this function to find the percent of all the students. So now yeah. So what I will do, I'll apply marks and then percent.
See, I've got it. Dushyant 15%, Divyanshi 13%, Manas 35%, Harshita 38%. ठीक है भाई. So this is the way in which you can make use of lapply function. We can make use by designing your own functions. You can use matrices, data frames and all these stuffs. ठीक है. इसके बाद एक एस अप्लाई में ट्राई करके देखूंगा. लाइक आई डोंट थिंक इसकी रिक्वायरमेंट है वैसे. S apply will have to see like what is the functions associated with this. Then I can come back to you. Okay. So right now L apply and apply is more than enough for you guys. Okay. So try to get through all with these functions very frequently. ठीक है यार. आपको आने चाहिए सारी चीज़ें. अदरवाइज क्या होगा, अब बाबा फॉर लूप लिखने बैठोगे तो भैया इस लैंग्वेज की यही बेनिफिट है इन लैंग्वेजेस यूज़ करने की, आर की, पाइथन की, दैट यू डोंट हैव टू राइट लूप्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ठीक है. अगर आपको बाबा लूप लिखना ही पड़ेगा तो फायदा क्या है. ठीक है, इन लैंग्वेजेस को यूज़ करने का. सो द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज इज दिस मच ओनली दैट इट हेल्प्स यू टू से इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स फ्रॉम राइटिंग कोड्स. ठीक है. और जो बिगिनर लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही प्यारे लैंग्वेजेस होते हैं ये. दिस आर वेरी गुड लैंग्वेज. गॉट इट. सो ग्रेट. सो यूजर डिफाइंड फंक्शन इज क्लियर टू यू कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कब यूज करते हैं. Harshita, is this clear? Like when we need to use user defined function? Yes, sir. या मुझे आलोक बोल दो, अच्छा लगेगा प्लीज यार. यूजर डिफाइंड फंक्शन. ग्रेट. ठीक है. सो दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन विच वी अप्लाइड हियर. ग्रेट. या. नाउ what we should do basically is that yeah. So great. Now let us see indexing for the matrices. Now let us see indexing for the matrices. 7:30. I will go for 5 minutes or like 10 minutes for indexing, and after that we will introduce the concept of deep layer. Indexing देखो यार. So हमने create किया था एक matrix mat. Fine. सबसे पहले ये समझो. ठीक है. एक कॉमा दिया हमने, कॉमा के पहले रोज आते हैं, कॉमा के बाद आपके कॉलम्स आते हैं. गॉट इट. जो उससे पहले हम एक फंक्शन देंगे डिम मैट. सी 10. अच्छा एक सेकेंड, लेट मी ट्राई वन फंक्शन मैट सी 1:9 डिम इक्वल सी 3,3. ओ शिट. dim names must be a list. Expand. नहीं पता फंक्शन मुझे. ठीक है. फाइन यार. या. सो while indexing the matrix or data frame, we need to use a square bracket, then a comma, and before comma you need to pass the rows, and after column comma you need to pass the columns. So now suppose that, yeah, and before this I use a function dim. So dim basically returns the dimension of the matrix, which is 10,10. Now just imagine I want the first 3 rows and all the columns. So first 3 rows. अगर 3 rows चाहिए मेरे को, तो you know now that 1:3 हमारा 1 to 3 create करता है. ठीक है. So I will pass this here and all the columns I want. So after column comma you don't need to give anything, and it will return you the answer. See, you've got the answer. Got it? Yeah. Now fine. Fine. Now I want all the rows. So all the rows के लिए हम कॉमा के पहले कुछ नहीं देंगे, and only the first 3 columns. See, it will be something like this. Now
we want to get both rows and columns. So Harshita, can you please help me out? What I need to give in the square bracket for both rows and columns? बताओ. I want the first three rows, first three columns. So what should be given the before comma and after comma? Hello, Harshita, am I audible? Yes, sir. I don't know. Why? Like, is this much clear to you? Yes, sir. And this one? Yes. तो सोच देखो, रो के लिए हमने पहले दिया ब्रैकेट के, कॉलम के लिए हमने बाद में दिया, तो दोनों एक साथ कैसे देंगे? दिव्यांशु, कैन यू हेल्प मी आउट प्लीज? So 1:3 after bracket same 1:3. Nice, awesome यार. Yeah. See, we have got. Now the point is only specific rows and columns. ना अभी तक हमने सीक्वेंस में दिया है, अब हमें स्पेसिफिक चाहिए. सो नाउ जस्ट इमेजिन आई वांट ओनली फर्स्ट थर्ड, ओनली द ऑड नंबर ऑफ रोज, ओनली द ऑड नंबर ऑफ रोज. ठीक है. सो एंड ऑल द कॉलम्स. सो व्हाट शुड बी गिवन हियर? दुष्यंत, क्या आना चाहिए पहले बताओ भाई. Can you please repeat the question again? आई वांट ऑल द ऑड नंबर ऑफ रोज, लाइक 1 3 5 7 9. Okay. So यहाँ पे क्या देंगे? ब्रैकेट यहाँ पे हम क्या देंगे इंडेक्सिंग के लिए? Uh, I guess we can give the gaps of like 2 or 3 like Yes, this. yes, yes. So I can give something like this. One, sorry, I can give C, 1, 9, and 2, I guess. Right? See? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9. Got it? और लाइक ये तो फिर भी एक फंक्शन हमने यूज कर दिया है. और फाइन, आप ऐसे दोगे मैट सी. नाउ जस्ट इमेजिन मुझे कुछ ही चाहिए, 1 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए. सी. So you will, whatever rows you want, you will pass that into a vector. Whatever column you want, you will pass that into a vector after the comma or before the comma. Got it? Any doubt till here? Anyone? Bharvi, are you able to follow up? What was the last line you said? I missed मैंने it. कुछ कहा? क्या कहा मैंने यार? Regarding vector, whatever something. यार मैं भूल गया. Wait, let me. Oh, actually, my phone rang, so I got There you go, distracted. let me remind. Yeah. So I said that whatever number of rows or columns you want, you can specify that particular set into a vector and pass on pass on as the argument inside the square bracket. Got it? Okay. Great. Yeah. So I hope no one has any doubt till here. And if you don't have any doubt, then I'll proceed to the new topic. Okay. So now let us go to the topic of deep layer. नहीं, deep layer रहने देते हैं, अभी छोड़ो यार, deep layer रहने देते हैं. Deep layer next class में करेंगे हम. पहले आज हम ना सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों को टॉपिक अच्छे से करते हैं, ठीक है? Now let me try to give some basic plots. Basic plots. Yeah. Yeah. So I will draw plot. So plot function यूज करने पहले क्या करेंगे हम? क्वेश्चन मार्क and this. See, XY plotting. And then it will return you all these things. ठीक है? Yeah. So now let us try plot mat underscore df. नहीं, ये तो क्या नाम दिया था मैंने? या mat. Okay, fine. Mat को हमने data frame बनाया नहीं था. So what I will do now is that I will convert my matrix to a data frame. Now I will plot mat the column 1
mat मतलब column 2. Type I want. Type you can pass on p points, lines, both. So अभी हम क्या करते हैं पॉइंट देते हैं and let us see the result. See my row 1, sorry, column 1 and column 2 has this type of relation. अब हम क्या करते हैं अब हम इसको चेंज करते हैं. फाइन. P था, अब हम करते हैं इसे L. ओहो. And now let us see the result. See, so beautiful. हम बोथ कर देते हैं, देखते क्या मिलता है. Yeah. Then, so this is basically what is the type of plot that you want to get. Okay. Now main. Overall title that you want to pass on to the plot. ठीक है, तो हम पहले वाले थोड़ा काम करते हैं. पहले वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था. So main is equal to scatter plot. Scatter plot. So now I give the title also to my plot. Now I don't want my row name as mat dollar call $2. I don't just want them as call 1 and call 2. So let us see वो कैसे आएगा हमारा x lab and y lab. ठीक है. So x lab is equal to call 1, y lab equal to call 2. Shit man, oh sorry, I need to pass these in inverted commas. Now see, so I have changed my column name, sorry, x and y coordinate names. Got it. Now let us see, if I want to change the size of the dots, can I do that? यार फंक्शन होता है इसके लिए भी. ठीक है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट राइट नाउ. CEX function for changing. Okay, so CEX equal to 0.2. Fine. So yeah, I can see. And अगर हम इसे कर देते हैं 200. See, हाँ कुछ नहीं आया. इतना बड़ा हो गया कि उसे एडजस्ट नहीं कर पा रहा बेचारा. See, कितना अच्छा लग रहा है. So beautiful, है ना. Good. ठीक है. और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू इन दिस. ठीक है, अभी हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसके अलावा. चलो ठीक है, नाइस. नाउ ये तो हमने बनाया स्कैटर प्लॉट. ठीक है. अब मान लो भाई हम इसके अलावा चाहते हैं एक दूसरे टाइप का कुछ चेक करना. अच्छा भाई, लाइक या एक काम करते हैं, इसको हम 1 रहने देते हैं. सो ग्रेट. Harshita, if I'm audible to you, can you tell me any meaning or insight that you can take out from a scatter plot? General scatter plot. I'm not asking about this particular scatter plot. From a scatter plot, like why are they used for? Sir, we can be able to find where a particular value lies. उससे क्या होगा? I don't know. यार ठीक है, नहीं जानते, अच्छी बात है, बट ट्राई करते हैं ना. लाइक इस प्लॉट में मुझे इस प्लॉट में ये डॉट क्या दिखा रहा है? This dot is basically signifying the value corresponding, what is the y value corresponding to the x value. Am I right? Yes, sir. Similarly, it is representing the y coordinate value corresponding to the x, or x coordinate value corresponding to the y.
So, scatter plot is basically used to find out the correlation, between the given data. ये पता होनी चाहिए आपको, सिर्फ प्लॉट जनरेट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है. ग्रेट. नाउ सो एक डेंसिटी प्लॉट बनाते हैं हम. डेंसिटी, सॉरी, मैट डॉलर कॉल वन, देन प्लॉट. See, I've got this. Now, ठीक है, हमने कलर चेंज कर दिया. I want to now change the title. So main equal to density plot for call one, ठीक है. और या दिस इज नाइस, ठीक है. अब इसी चीज़ का सोचो, देखो ये मैंने एक कॉलम के लिए बनाया है. व्हाट इफ आई वांट टू मेक द स्कैटर डेंसिटी प्लॉट फॉर ऑल द डिफरेंट 10 कॉलम्स. तो 10 के 10 कॉलम्स का बनाना है, कैसे बनाएंगे. सो दे आर द डिफरेंट थिंग्स विच विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास, बिकॉज वहाँ पर हम फॉर लूप वगैरह का यूज़ करेंगे, ठीक है. Then now let us try one more function here, which is called multiple plots in a single panel. Multiple plots in a single panel. Now this is a very important function. Par mf row equals c 2, 2. अब देखो मैं मल्टीपल प्लॉट एक ही सिंगल पैनल में ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है. टू, थ्री, फोर. रेड को करते हैं ग्रीन, यहाँ पे रेड को करेंगे हम ब्लैक, यहाँ रेड को करेंगे ब्लू, या ब्लैक इज नॉट दैट गुड, तो इसको कर देते हैं हम ऑरेंज. नहीं, ऑरेंज तो रेड हो गया, नीला पीला हरा हो गया, लाल हो गया, येलो कर देते हैं. और यहाँ पे कर देते हैं डेव डॉट ऑफ. Oh shit man, ये कर दी मैंने. Great. So yeah, great. Oh shit, ये एक दिक्कत आ गई ना, देखो. या ये मैंने चेंज नहीं किया था ना, कॉल वन कॉल टू कॉल थ्री कॉल फोर को, तो इसलिए दिक्कत आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये चेंज करना चाहिए बेसिकली. सॉरी, कॉल वन कॉल टू कॉल थ्री कॉल फोर. ठीक है, अब ये शायद चेंज हो गए होंगे या नाइस. ठीक है, गॉट इट. कोई डाउट है किसी को? नाउ I want to save this plot. So what I'll do, into a PDF format. So PDF density plot dot PDF. So try to understand the concept कैसे हो रहा है, ठीक है. Then I will take all these things, put here. देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ इस कमांड के थ्रू, PDF density plot dot PDF, it will create a PDF. You want to see how? So just come here and see. It has created one, but you will not be opened it. It will give me error. We can't open this file because it is still open in the R. I have not closed this file. So to close this file, dev.off is used. Then I want to create the pictures into this particular manner, and then I will use all these codes. Now let us see the results. Now it will open. See, so I have got 4 plots
into a single panel into a PDF format. Got it? In the meantime, in the meantime, I can also export my plot from here. Save as image, save as PDF. Save as image करते हैं. JPEG, ये देखो यार इतने सारे फॉर्मेट आपके पास आएंगे, ठीक है. PNG, JPEG, TIF, BMP, Metafile, SVG, EPS. You are basically not that much familiar into the world of computer vision or image processing. So you must not be knowing about these different file formats, but all these are very important file formats, okay, for image data basically. So currently I am storing it as JPEG. File name, density, plot, fine. मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो कर देते हैं टेक. डायरेक्टरी यस, जिसमें हम काम कर रहे हैं वहाँ पे चाहिए हमको प्लॉट. व्यू प्लॉट आफ्टर सेविंग यस, एंड देन सेव. अब वो दिखेगा आपको प्लॉट. हाँ कितना गंदा लग रहा है, बट यस, ठीक है. सो आई विल डिलीट इट बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी प्लॉट, ठीक है. So let us save once again. Now I am able to get a good plot. ठीक है, पहले बहुत बेकार हो गया था एस्पेक्ट रेशियो के चक्कर में. Got it? So you have both the options to save the plot. Try to use this particular command like way. PDF पहले create कर लो, पहले एक PDF create करो, फिर जितने प्लॉट बनाने बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, एंड में सेव हो जाएंगे सारे अपने आप. डब डॉट ऑफ कर देना, सारे प्लॉट आपको सेव होकर मिल जाएंगे एंड में. गॉट इट? सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डिजाइन प्लॉट्स इन R and work with these things. ठीक है. Now I will do this same concept. We find you must not be having installed the libraries. Fine, yeah, not a issue. Okay, great. So guys who do not have pre-installed the libraries, you can install few libraries into your RStudio by using the command install.packages, and here you give the name of the package. So we'll not be doing any new topic today now, because otherwise it will go just above the heads. Okay. So dplan is one package that we'll be making use of. So I'm just telling you how you can install packages, and then you need to click on control and enter. It is pre-installed over my laptop, so I will not be doing this, but you can install the libraries like this using this command install.packages dplan packages ggplot2. And what if I want to install multiple packages in one go? ठीक है, तो C dplan ggplot2 और यहाँ पे लिख दो install.packages. इसे आप सेव कर रन कर दोगे, आपका कोड चल जाएगा. ठीक है. सो आई गेस दिस इज लिटरली मोर देन एनफ फॉर अ क्लास. ठीक है, बिकॉज हमने लिटरली बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं आज. ठीक है, यूजिंग डिफाइंड फंक्शंस एंड ऑल. ठीक है यार. सो नाउ इफ यू हैव ओके फाइन, लेट मी टेक टोटल 5 minutes मोर टाइम to summarize everything, and then we can have a common Q&A and the general suggestion section. ठीक है यार. So just give me 5 more minutes.
Great. Yeah. So, okay, fine. So what we have done today is that we did not cover three topics here. We covered only two topics. We covered only two topics, and I guess we covered these two topics in greater depth, in details. Okay, and along with that, we have covered so many new concepts. So in the next class, we covered these topics. Okay, because D plat, GG plot, these are very like 10 minute things. Okay, and these will take years to learn. Okay, because these are very broad topics. Okay, so we'll see these topics in the next class. But yeah. So in today's class, what we have done is that we started with basically what matrix. We use the functions apply, lapply. We use the concept of user defined function. Okay. We saw how to create data frame. Data frame. We saw the concept of list. Okay. Then we saw plotting in R, plotting, and we also saw how to save plots. Save plots, how to save data, how to save data, write.csv command. Okay. So these are the few topics that we covered in today's class, and literally trust me on this, these are literally much more than enough for a 1.5 hour session in which we covered. Okay. So let me save one more data that we downloaded, we created today. Just give me a minute. Fine. Yeah. So I want to save my mat underscore df also. CS mat कर लेते हैं mat. ठीक है. Mat dot csv. Fine. So yeah. So we save total these many data today. So R plot, density plot, df, mat, and this. So now today, like now you have a broader idea. You have an idea that how data is being created. ठीक है. सो अब जब आपको ये पता है कि डेटा क्रिएट कैसे होता है, तो यू विल बी एबल टू मैनिपुलेट द डेटा नाउ. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्लास, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली डेटा रीडिंग से. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम डेटा उठाएंगे CSV फॉर्मेट का, हम उसको डायरेक्टली प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे. तो नाउ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द एल अप्लाई, एस अप्लाई एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस. So you'll be applying all these concepts from the data that you'll be reading, and definitely like in the next class I will also be introducing the concept of user defined function in more detail, because we will be creating at least 5 to 7 functions in class. Yeah, because then only you will be able to get the crux of all these things. And in the next class to that we will cover the concept of loops and conditionals. Yeah, so in this flow you will be able to understand R in a very broader sense, and how R is being used for data analysis. Okay, now if you have any doubt, you can ask me. I am done from my side. Yeah, great. Fine. Yeah. So let me stop screen presentation. Let me stop the screen recording.